Hello students, welcome you all in next part of NEET Biology Boost Up series that is called as Capsule 2. What we are going to learn today? Today's question is zygotic meiosis is characteristic of which of the following examples? Examples are given and the correct answer is chlamydomonas. ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ what is zygotic meiosis and what other terms are related with zygotic meiosis and the important exceptional cases under them which you should have to learn for your NEET exam. Next question is life cycles of ectocarpus and fucus. Again two examples are given, ectocarpus and fucus exhibit which type of life cycle? Haplodiplontic, diplontic. Both ectocarpus and fucus are the type of algae and the correct answer is ectocarpus with haplodiplontic and fucus diplontic. These are exceptional cases. So today we will focus on life cycles of plant and exceptional cases. First, what is zygotic meiosis? One thing should be clear to you that zygotic meiosis and haplontic life cycle are the same terms. तो ਤੁਹਾਨੂੰ question आ सकता which of the following exhibit haplontic life cycle or maybe zygotic meiosis. ठीक है, तो haplontic life cycle च की है major जो portion है life जो plant life है that is haploid or haplontic. ਹੈਪਲੋਂਟਿਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ that is haploid n. ठीक है, having half number of chromosomes. So gametophyte multicellular structure जो main plant body है that is a gametophyte. So points are under zygotic meiosis diploid structure is present only as a zygote. So सिर्फ एक zygote ही बनता एक cell, single cell which is diploid. Immediately that zygote undergoes meiosis to form haploid spores which form gametophytic plant body. Dominant phase of life is haploid. ठीक है, same haplontic life cycle means free living gametophyte. टर्म्स रिलेटेड ने, टर्म्स याद होने चाहिए ने, उस टर्म की फॉर्म दे विच भी तुहानूं नीट च क्वेश्चन पूछा जा सकता. ठीक है, गेमीटोफाइट कि किहड़ा एग्जाम्पल है जिहदे च फ्री लिविंग गेमीटोफाइट बनता. ठीक है, तो तुहानूं समझ आना चाहिए कि यही टर्म ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ है, यही टर्म हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ਨਾਲ रिलेटेड है. ਜ਼ਾਈਗੋਟ इमीडिएटली अंडरगो मियोसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ਹੁਣ एग्जाम्पल्स से फोकस करो. ऑल फंजाई एग्जिबिट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ मियोसिस. नंबर 2 मैनी एल्गी नॉट ऑल एल्गी. ठीक है, वो एल्गी ने एग्जाम्पल्स थोड़ी NCERT बेस्ड ही ने एग्जाम्पल्स ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, दे ऑल एग्जिबिट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ मियोसिस. ਦਾ क्वेश्चन इस फॉर्म च भी आ सकता जो दोनों क्वेश्चन आप देखे ने इन द स्टार्टिंग. ठीक है, सो बोथ क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम ग्रुप एल्गी ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है, क्लमाइडोमोनास एग्जिबिटिंग ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ मियोसिस और नेक्स्ट एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस. ठीक है, सो हुण ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ मियोसिस टर्म आपां नूं क्लीयर हो गई. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਮ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗੈਮੀਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ. ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਡਿਪਲੋਂਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕਿ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ that is a sporophyte. ठीक है, sporophyte diploid body one and the same thing. 2n symbol ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ having double chromosome number जो exact ਹੁੰਦਾ. ठीक है, सो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर आ ਉਹਦੇ 'ਚ जो गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन आ ਜਾਂ जो ਆਪਾਂ ਗੈਮੀਟੋਫਿਟਿਕ स्ट्रक्चर कहने ਆ दैट इज़ अ सिंगल सैल्ड गैमीट्स की फॉर्मेशन ही होंगी है. सिंगल सैल्ड याद रखना. ठीक है, गैमीटोफाइट की दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स दैट इमीडिएटली फ्यूज टू फॉर्म ਜ਼ਾਈਗੋट. डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ਜ਼ਾਈਗੋट
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਟ ਆਰ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੰਡਰ ਗੈਮੀਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ? Haploid structure only a gamete. All structure except gamete are diploid. All structure except that gamete are diploid. ठीक है? And this is called as diplontic life cycle or gametic meiosis. जिसे आप कहते हैं here gametic meiosis occurs. Meiosis occur only at time of gamete formation. So gametic meiosis means meiosis occur only at the time of gamete formation. ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਸਮ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ, ਸੋ ਫਿਊਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਿਵਨ ਇਨ ਯੋਰ NCERT book. Fucus exhibit diplontic life cycle. It is a form of algae. It exhibit diplontic life cycle. And next, all angiosperm, all gymnosperm and all animals are having diplontic life cycle. ठीक है, clear है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ next, what is third type of life cycle? That is haplodiplontic. Haplodiplontic name तो ही clear है, having haploid and diploid both type of life cycles. ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਨੇ? ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਐਂਡ ਟਰੀਡੋਫਾਈਟਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ phase that is haploid gametophyte. So haploid gametophyte is the dominant independent phase. Main phase है gametophyte, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ multicellular जो sporophyte ਦੀ formation ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is dependent on gametophyte. ठीक है, वो gametophyte ਦੇ ਉੱਤੇ depend करता for its nourishment. And difference ਜੇ ਦੇਖੀਏ tridophytes ਦੇ ਵਿੱਚ, in them dominant independent phase is a sporophyte, diploid sporophyte. And in pteridophytes there occurs the formation of multicellular gametophyte but which is independent. ਤਾਂ pteridophytes ਦੇ ਵਿੱਚ independent structure ਬਣਦਾ gametophyte ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ prothallus. So prothallus is the term related with only pteridophytes. ਤਾਂ ਨੀਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਥੈਲਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡੋਫਾਈਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਲੋਟਮ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਲੋਟਮ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਐਡੀਐਟਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਰਿਸ, ਟਰਾਇਓਟੈਰਿਸ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਟਿਪੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਯੂਰ NCERT ਬੁੱਕ। ਸਿਰਫ NCERT ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਦਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਸਲੈਜੀਨੇਲਾ, ਇਕੁਸਿਟਸ, ਸੈਲਵੀਨੀਆ, ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ, ਸੋ these are other example which exhibit haplodiplontic life cycle and a special structure prothallus. Similarly bryophytes ਦੇ ਵਿੱਚ examples ਵੀ learn ਕਰਨੀ ਆ। तो Markensia funaria, Polytrichum and Sphagnum, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ question ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ Sphagnum ਦੇ ਵਿੱਚ haplodiplontic life cycle ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਪੈਗਨਮ ਟਰਮ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਲਾਈਨ ਇਨ ਯੂਰ NCERT ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ NCERT ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ? ਹੈਪਲੋਡਿਪਲੋਂਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ that is exhibited by some algae that are very very important. ਉਹਨਾਂ ਐਲਗੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ, ਪੋਲੀਸੀਫੋਨੀਆ, ਕੈਲਪਸ, ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਹੈਪਲੋਡਿਪਲੋਂਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ ਤੇ ਫਿਊਕਸ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਐਲਗੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਲੋਡਿਪਲੋਂਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਸਫੋਨੀਆ ਐਂਡ ਕੈਲਪਸ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਐਲਗੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਹੈਪਲੋਂਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਫਿਊਕਸ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਡਿਪਲੋਂਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ, ठीक है। बाकी पॉइंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर ने कि all angiosperm and gymnosperm are diplontic, all bryophytes and pteridophytes are haplodiplontic and all fungi are haplontic। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੇ, ਮਿਊਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, that exhibit which of the life type of life cycle, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂਡੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਨੀਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਅਹੈਡ। Hello students, welcome you all in next part of NEET Biology Boost Up series that is called as Capsule 2. What we are going to learn today? Today's question is zygotic meiosis is characteristic of which of the following examples? Examples are given and the correct answer is Chlamydomonas। तो आज की वीडियो च आपां देखेंगे what is zygotic meiosis and what other terms are related with zygotic meiosis and the important exceptional cases under them which you should have to learn for your NEET exam. Next question is life cycles of ectocarpus and fucus. Again two examples are given, ectocarpus and fucus exhibit which type of life cycle? Haplodiplontic, diplontic. Both ectocarpus and fucus are the type of algae and the correct answer is ectocarpus with haplodiplontic and fucus diplontic. These are exceptional cases. So today we will focus on life cycles of plant and exceptional cases. First, what is zygotic meiosis? One thing should be clear to you that zygotic meiosis and haplontic life cycle are the same terms। तो ਤੁਹਾਨੂੰ question ਆ ਸਕਦਾ which of the following exhibit haplontic life cycle or maybe zygotic meiosis, ठीक है। ਤਾਂ haplontic life cycle 'ਚ ਕੀ ਹੈ, major ਜੋ portion ਹੈ life ਜੋ plant life ਆ that is haploid or haplontic। ਹੈਪਲੋਂਟਿਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਲੋਇਡ, ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਸੋ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ that is a gametophyte। So points are under zygotic meiosis diploid structure is present only as a zygote। So सिर्फ एक zygote ही बनता, एक सेल सिंगल सेल which is diploid, immediately that zygote undergoes meiosis to form haploid spores which form gametophytic plant body। Dominant phase of life is haploid, ठीक है। Same haplontic life cycle means free living gametophyte। टर्म्स रिलेटेड ने, टर्म्स याद होने चाहिए ने, उस टर्म की फॉर्म दे विच भी तुहानूं नीट क्वेश्चन पूछा जा सकता, ठीक है। गेमीटोफाइट कि किहड़ा एग्जाम्पल है जिहदे च फ्री लिविंग गेमीटोफाइट बनता, ठीक है। तो तुहानूं समझ आना चाहिए कि यही टर्म ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, यही टर्म हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ਨਾਲ रिलेटेड है। ਜ਼ਾਈਗੋਟ immediately undergo meiosis we have already discussed। ਹੁਣ एग्जाम्पल्स से फोकस करो। ऑल फंजाई एग्जिबिट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ meiosis। नंबर 2 मैनी एल्गी, नॉट ऑल एल्गी, ठीक है। वो एल्गी ने एग्जाम्पल्स थोड़ी NCERT बेस्ड ही ने एग्जाम्पल्स, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਮਾਈਡੋਮੋਨਾਸ, ਵੋਲਵਰਕ, ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ, ਦੇ all exhibit हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ meiosis ਦਾ क्वेश्चन इस फॉर्म च भी आ सकता। जो दोनों क्वेश्चन आप देखे ने इन द स्टार्टिंग, ठीक है,
So both questions they are from group algae of the plant kingdom. ठीक है, Phylmidomonas exhibiting zygotic meiosis और next ectocarpus and fucus. ठीक है, सो ਹੁਣ zygotic meiosis टर्म ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਮ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗੈਮੀਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। दिस इज रिलेटेड विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कि मेजर पोर्शन जो लाइफ साइकिल आ प्लांट ना दैट इज अ स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बॉडी वन एंड द सेम थिंग, 2n सिंबल दिता होया उन्होंने, हैविंग डबल क्रोमोसोम नंबर जो एग्जैक्ट होंदा। ठीक है, सो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर आ, उहदे च जो गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन आ जां जो आप गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर कहने दैट इज अ सिंगल सैल्ड गैमीट्स की फॉर्मेशन ही होंगी है, सिंगल सैल्ड याद रखना। ठीक है, गैमीटोफाइट की दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स दैट इमीडिएटली फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट, जिहड़ा कि फिर एक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंदा। सो वट आर द पॉइंट्स अंडर गैमीटिक मियोसिस? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर ओनली अ गैमीट, all structure except gamete are diploid, all structure except that gamete are diploid. ठीक है, and this is called as diplontic life cycle or gametic meiosis, जिसे आप कहते हैं here gametic meiosis occurs. Meiosis occur only at time of gamete formation. So gametic meiosis means meiosis occur only at the time of gamete formation. On exceptional case क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप डिस्कस किया शुरू सम ब्राउन एल्गी। सो फ्यूकस इज द ओनली एग्जांपल गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। फ्यूकस exhibit diplontic life cycle, it is a form of algae, it exhibit diplontic life cycle. And next, all angiosperm, all gymnosperm and all animals are having diplontic life cycle. ठीक है, क्लियर है तुहानू? नेक्स्ट what is third type of life cycle, that is haplodiplontic. Haplodiplontic name तो ही clear है, having haploid and diploid both type of life cycles। ਹੁਣ दोनों तरह के स्ट्रक्चर तो हर एक फॉर्म हो रहे सी, पर ये दोनों स्ट्रक्चर की ने मल्टी सैलूलर। ठीक है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर भी मल्टी सैलूलर फॉर्म होता है इस लाइफ साइकिल से विच, ते डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो मल्टी सैलूलर। तो ये दो ग्रुप्स आते हैं अपने को, दो डिविजन्स ने प्लांट दियाँ, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइट्स। इन्हां च भी डिफरेंसिस ने, वो डिफरेंसिस नोट करने हैं जरूर। ब्रायोफाइट्स दे विच डोमीनेंट इंडिपेंडेंट फेस दैट इज हैप्लॉयड गैमीटोफाइट। सो हैप्लॉयड गैमीटोफाइट इज द डोमीनेंट इंडिपेंडेंट फेस, मेन फेस है गैमीटोफाइट, जिहदे उपर मल्टी सैलूलर जो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होंदी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। ठीक है, वो गैमीटोफाइट के उत्ते डिपेंड करता फॉर इट्स नॉरिशमेंट। एंड डिफरेंस जे देखिए ट्रीडोफाइट्स दे विच, इन दैम डोमीनेंट इंडिपेंडेंट फेस इज अ स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, and in pteridophytes there occurs the formation of multicellular gametophyte but which is independent। तो pteridophytes ਦੇ ਵਿੱਚ independent structure ਬਣਦਾ gametophyte ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ prothallus। so prothallus is the term related with only pteridophytes। ਤਾਂ ਨੀਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ prothallus ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ pteridophyte ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, पर हो सकता तुहानू एग्जाम्पल सिलोटम ना याद होवे, उत्थे सिलोटम टर्म लिखी होवे, एडिएटम लिखिया होवे। ठीक है, हो सकता टैरिस ट्रायोटैरिस तो कॉमन एग्जाम्पल्स तुसीं देखते हो। ठीक है, तो तुसीं ये तुहानू याद ने, पर दूसरियां जो टिपिकल एग्जाम्पल्स ने नहीं याद, तो तुसीं एग्जाम्पल से फोकस करना जरूर। ये एग्जाम्पल्स जो इत्थे मैंशन ने दे ऑल आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। सिर्फ एनसीईआरटी बुक दी एग्जाम्पल्स ही लर्न करनी है तुसीं। अदर प्लांट्स जो ट्रीडोफाइट्स के अंडर ने स्लैजिनेला, इक्विसिटस, एल्विनिया, लाइकोपोडियम। सो दीज आर अदर एग्जाम्पल विच एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड अ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोथैलस। सिमिलरली ब्रायोफाइट्स के विच एग्जाम्पल्स लर्न करनी है।
तो मार्केंशिया फुनेरिया पॉलीट्राइकम एंड सफेगनम हो सकता तुहानूं क्वेश्चन आ जाए कि सफेगनम दे विच हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुंदा। ठीक है, सो जे तुहानूं क्लीयर होगा, याद होगा कि सफेगनम टर्म जो एक असी एग्जाम्पल आ लर्न की ब्रायोफाइट्स के अंडर, तां तुसीं लिखोगे तुहानूं ब्रायोफाइट के सारे करैक्टर, सारे जो डिवीजन के करैक्टर तुहानूं सारे याद हुंदे ने, पर कई बार तुसीं एग्जैक्ट एग्जाम्पल ते फोकस नहीं किया हुंदा ते तुहानूं याद नहीं हुंदी टाइम उस टाइम। तो तुसीं एग्जाम्पल्स भी सारियां लर्न करनियां ने। ईच एंड एवरी लाइन इन योर NCERT इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ NCERT नूं पूरी तरह तुसीं समझना, याद रखना एग्जाम्पल्स नूं। एंड एट लास्ट तुसीं की याद रखना हुण, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट इज़ एग्जिबिटेड बाय सम एल्गी दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एल्गी ने जो एग्जाम्पल्स ने तुहाडी बुक च दित्तियां मैनशनड ने, तुसीं हुण नोट डाउन करनी है। एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स दे एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, स्टार्टिंग च असीं क्वेश्चन एक्टोकार्पस ते फ्यूकस दो एग्जाम्पल्स कीतियां, दोनों एल्गी दे अंडर आउंदियां ने। एक्टोकार्पस दे विच हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुंदा, नाल दो होर एग्जाम्पल्स ने पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स, ये भी नोट डाउन करनियां ने। इन्हां दे बेस ते भी क्वेश्चन आ सकदा तुहानूं नीट एग्जाम च। ठीक है, एंड मोस्ट एल्गी दे एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड देयर इज एन एक्सैप्शनल केस फ्यूकस विच एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तुहानूं क्लीयर ने कि ऑल एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आर डिप्लॉन्टिक, all bryophytes and pteridophytes are haplodiplontic and all fungi are haplontic। तुहानूं किसी फंजाई की एग्जाम्पल आ जाए, म्यूकर लिखा होवे दैट एग्जिबिट विच ऑफ द लाइफ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो तुहानूं क्लीयर होना चाहिए कि तुहाडी बुक दे विच किहड़ी डिवीजन दे अंडर किहड़ियां एग्जाम्पल्स ने तुसीं याद रखनियां ने। ठीक है, टुडे मेरा मेन फोकस है कि तुसीं आपदी जो नीट प्रैपरेशन आ उस एग्जाम्पल्स से भी फोकस करो, तो तुहानूं लाइफ साइकल्स ने हुण क्लीयर हो गए होने आ, अपनी बुक चो रीड जरूर करने आ। एंड ऑलसो तुसीं इस वीडियो नूं मैक्सीमम जो नीट दी प्रैपरेशन कर रहे उन्हां स्टूडेंट्स दे नाल शेयर करना, सबसक्राइब करना चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।